नोज़ की स्केचिंग और शेडिंग आज करेंगे। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को क्रॉस कराऊंगी। वंस दिस इज डन तो मैं एक मिड पॉइंट पे एक सर्कल को ड्रॉ करूंगी। इसी सर्कल के एडजेसेंट दो छोटे सर्कल्स को ड्रॉ करूंगी। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू ड्रॉ द सर्कल्स, एक रफ स्केच बस करना है। अब इन दोनों सर्कल्स को क्रॉस करके लाइन से पार्टीशन क्रिएट कर लूँगी मैं। सो एज़ यू हैव सीन कि मैंने 4 लाइन्स से ड्रॉ करके क्रॉस कर लिया है। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग सम कर्व इनसाइड दैट मिनी सर्कल जो कि नॉस्ट्रल्स होंगी। नाउ आई एम गिविंग शेप टू द लोअर एरिया ऑफ द नोज़। और अब मैं नोज़ की बाउंड्रीज़ जो है उसको क्रिएट करूँगी। इन ऑर्डर टू क्रिएट द कंप्लीट नोज़ मैं 2 और सर्कल ड्रॉ करूँगी जिसकी साइजेस सबसे पहले वाले सर्कल से थोड़ा छोटे होंगे। अब जब मैंने नोज़ की हाइट को डिसाइड कर लिया है तो मैं इसके अलॉन्ग नोज़ की बाउंड्री जो है उसको ड्रॉ करूँगी। नाउ आई विल स्टार्ट इरेजिंग दी हेल्पिंग एरियाज़ जो सर्कल्स थे और लाइंस थी जिनकी हेल्प से मैंने इसको ड्रॉ किया था। आई erase all those areas, they are unnecessary right now. नेक्स्ट मैं 4B पेंसिल की हेल्प से थोड़ा सा आउटलाइन कर लूँगी और जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको डार्क कर लूँगी ब्लैक कलर का। नाउ आई एम यूजिंग ग्रेफाइट पाउडर और ग्रेफाइट पाउडर को मैं स्टम्प की हेल्प से थोड़ा सा फिलिंग इसकी कर लूँगी और आउटलाइन दे लूँगी। चारकोल पाउडर जो है वो बहुत हार्श लुक देता है, इसलिए मैं आई एम यूजिंग ग्रेफाइट पाउडर, इससे थोड़ी सी सॉफ्ट लुक आती है। स्टिल यूजिंग द ग्रेफाइट पाउडर और मैं थोड़ा सा ब्रश और स्टम्प की हेल्प से इसको एक रियल लुक देने की ट्राई कर रही हूँ बाय ओवर राइटिंग ऑन द बाउंड्रीज एंड एजेस जो कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए थे। ब्रश जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड अच्छा कर देता है और थोड़ा सा सॉफ्ट सी लुक देता है एज़ कम्पेयर टू स्टम्प जो है वो थोड़ी सी हार्श लुक देता है। दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा फीचर कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू नोज़ तो आपको ब्रश और स्टम्प दोनों को ही यूज़ करना है क्योंकि इन दोनों का एक अलग इम्पैक्ट होता है ड्राइंग पे, शेडिंग पे। नोज़ का जो आउटर एरिया है उसको भी मैं थोड़ा सा शेड कर लूँगी यूजिंग द ग्रेफाइट पाउडर। थोड़ी सी लाइन मेरी डल हो गई है तो आई एम making it a bit dark with the use of my pencil
और जो आउटर एरिया उस पर मैं कुछ टाइनी डॉट्स जो हैं उनको क्रिएट करूँगी एंड देन आई विल बी blending them with the help of a brush to give it a settled look. लाइकवाइज मैं नोज़ के आउटर एरिया में टाइनी डॉट्स दोबारा से क्रिएट करूँगी एंड आई विल बी ब्लेंडिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ पेंट ब्रश. अब मैं चारकोल पेंसिल की हेल्प से एक आउटलाइन जो है नोज़ को दे दूँगी. इससे थोड़े से कुछ एरियाज जो हैं वो हाईलाइट भी हो जाएंगे एंड आई विल बी blending it with stump to give it a settled look. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग पेंसिल इरेज़र और मैं नोज़ का जो मिडिल पोर्शन है उसको हाईलाइट कर लूँगी. So this was all about sketching and shading the nose feature.